बहुत पुराने ज़माने में एक ऋषि अगस्त्य होते थे हमारे। एक दिन सुबह वो साधना में बैठे थे अर्ली मॉर्निंग में, उनको कुछ आवाज़ आई। उन्होंने देखा कुछ लोग जो है पेड़ से उल्टे लटके हुए हैं, उनके पाँव बंधे हुए हैं और पेड़ से लटके हुए हैं और उसके नीचे एक जैसे आग का एक पूरा वो है एक्चुअली तो। और वो लोग बहुत भयभीत, बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं और वो चिल्ला रहे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो फिर उन्होंने उनसे बात की ऋषि अगस्त्य ने कि आप कौन हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे फोर फादर्स हैं। अच्छा। हमारा आपके ऊपर ऋण है एक्चुअली, यू ओwe a debt to us एक्चुअली। मतलब कि हमने आपको जन्म दिया है और ये जो क्रम है इसको आपको आगे बढ़ाना है एक्चुअली, तो आपका ऋण उतरेगा एक्चुअली। पुराने लोग बोल के गए हैं जीवन में कि प्राप्ति में समाप्ति है, कि जब तक कोई चीज़ अपने को नहीं मिलती है तब तक अपने को लगता है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जैसे बच्चा है, उसका खिलौना मिल जाता है तो लगता है बहुत खुश हो जाएगा, पर जैसे वो खिलौना मिला वो दूसरे खिलौने के लिए रोने लग जाता है कि अभी मेरे को वो दूसरा चाहिए। वैसे ही अपनी लाइफ है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट एक्चुअली। I have a very special guest today, Mr. Ishwar Mangal, a person who has come from a very small town of Rajasthan, studied in a Hindi medium school, and now has grown to be the CEO of Global Services at the wind energy major Suzlon. He is an alumnus of VIIT Pune from one of the early batches of 1992. Welcome to our show, Ishwar ji. Thank you so much, Bharat ji. It's a great privilege and honor for me to be part of this show today with you. Ishwar ji, tell us about your professional journey so far. I graduated from VIIT Pune in the year 1992 Yes. into mechanical engineering, and after that I went to Mumbai, and I was planning to go to US for doing my masters. I have a group of around 3 to 4 friends. Unfortunately, because of some illness, because of some kidney stone, diagnosed in the month of around July or August 1992, I had to shelve my plan to go to US for the masters. And then I settled in Mumbai, actually joined a small company, worked there for 1.5 years. Then my destination was written to go to Ahmedabad actually. So I got a job in Ahmedabad somewhere in the year 1994, and I shifted to Ahmedabad. I was working there in a small company for 1.5 years. And then somewhere into March 1996, I came across to Suzlon Energy Limited. It was a startup company at that point of time. And I met the promoters, and once explained to me about the concept of the company, that they are thinking about bringing the renewable energy concept, the wind energy, to India market. I was really very excited about that actually. So in 1996, I joined Suzlon Energy Limited at Ahmedabad as a sales executive. From there, I have grown with the company to ranks and hierarchy, from sales executive to the general manager sales, then to the chief sales officer for the globe. And then 2016, I was made as the CEO for the global service. So Wow. the journey over last 27 years in Suzlon has been very exciting for me. You joined Suzlon in its very, very initial years. At that time, this sector was at its very nascent stage. उस समय क्या challenges रहे होंगे आपके लिए? Yeah, it was truly a startup in 1996, actually, the first year of the company. The biggest challenge was there to explain about the concept that what is wind energy. कि कैसे हवा से बिजली पैदा हो सकती है और कैसे ये बिजली अपना ग्रिड में यूज हो सकती है. One of the example is that we met to a senior policy maker in 1996, and because that time there was no policy, there was no awareness, nothing actually in the country. So we had to start right from a clean slate. And when we explained to them the kind of reaction what we used to get, actually it was very disappointing, honestly. He said कि ये पंखे से बिजली कैसे पैदा होगी, ये पंखे बिजली खींचते होंगे. When we used to go and meet the customers, they also used to not to believe actually कि ये कैसे पंखे लगेंगे, कैसे चलेगा, क्या होगा. So honestly, when we started, we had no big banners, no deep pockets, no track record. As a company, we were believing this is the future actually. So then we studied that what is the market dynamics, what is the potential, what are the challenges, and we decided 3 very basic principles of doing the business. First principle was that let's not go to the market, let's not go to the customer with a product, because if you go and sell a windmill, nobody will buy it actually. क्योंकि windmill खरीदेंगे तो उसको लगाने के लिए जमीन खरीदना है, फिर परमिट्स लेने हैं, फिर उसको मैनेज करना है, मेंटेनेंस करना है, ईबी के साथ में डीलिंग करना है. So it's a very complex deal for a customer that he will not like to go into that hassle actually. So we brought an idea of a wind park
that we will buy the land, Hmm. we will do the full planning actually. We will set up the windmills, we'll create the roads, we'll create the power evacuation system actually. Then we will go to the customer that this is the project. If you invest in this project, you will get the power generation and everything is managed by us actually. So that was the first principle actually. Right. The second rule, what we decided, that this is a technology project. We have to be always alert and up to date on the technology platform actually. And that time, wind turbine means Europe. Huh. The entire hub, the epicenter for the full technology development of Was renewable energy was Europe Was only Europe. actually. And those companies were not keen to transfer the technology from Europe to India. So what we decided as a team that we'll open up our own R&D offices in Europe in those days. And we were very clear that every year we'll try to transmit the technology from Europe to India in piecemeal actually. And in next 4 to 5 years, we should become fully independent. The third most important thing, what we decided, that this is a huge capital investment kind of project. So we have to approach to the customers and to the employees to build a relationship for the lifetime, not for the transaction. So every customer where we used to go, we used to talk very transparently with facts and figures and explain to the customer that what is the concept, what are the benefits, what are the advantages if you invest into this project. And at the same time with the employees also, that you are not part as the employee of this company. You are part of the family. You are part of a mission actually. आपने बताया that the technology plays an important role in this solution. Yeah. Because finally a turbine is a technology product. Right. Any social challenges during the process? Yeah, honestly, once we design a wind turbine, actually, we need to go for this selection of the right sites. And the sites means you need plenty of land area. So when we used to go to the urban and the rural part of the country, and at one of a very prominent site of Maharashtra, where we had put up almost 600 wind turbines. And suddenly, like some point of time, there was a drought in that area. And the local farmers, they were completely misguided. And they felt that because of these wind turbines, the clouds are being taken away actually. And it was such a difficult situation, honestly. Sure. We went to the local villagers, farmers, tried to explain to them कि इसके कारण आपके क्लाउड्स नहीं जाते हैं, इसके कारण क्योंकि ये वर्ल्ड में सब जगह विंडमिल्स लगे हुई है. Fortunately, the next year there was a very heavy monsoon, more than the average actually, and then those guys were fully convinced actually. So there have been a lot of challenges, honestly, and our philosophy right from day one has been that wherever we work across the country or across the globe actually, we want to give it back to the neighborhood actually, whatever best we can do actually. So after that, we have not really seen any such kind of challenges anywhere in India or outside India. You have been part of the Suzlon story right from its inception. Yeah. What were the turning points during its early years? Yeah, early years have been very challenging, very uncertain actually. And as I said that we started in March 1986, and immediately like after 2 years, in somewhere into May 1998, Gujarat coast was hit by a very severe cyclone. Achha. And by that time, we had installed approximately 60-70 wind turbines only in the state of Gujarat, and most of the turbines are very badly affected. So then everybody felt that now it is the end of the company actually, just in the beginning years. But then as a team, we decided that can we really convert this challenge or this crisis into an opportunity? And that is a true vision of our chairman, late Shri Tulsi Bhai. And within 15 days, we came out with an innovative idea that why not we go to all these customers and tell them okay, this was something beyond our control, but we are here as your partner and we'll rebuild all the turbines. You help us to complete the process with the insurance companies because all these assets, they are insured fully actually. And you will be surprised that within 9 months' time, we did the full follow-up with the insurance company. We got all the claims, we built the new turbines on the same site, in the same field actually. Wow. We re-erected all the turbines. Wow. And the customers were so delighted actually. And as a reward of that, most of the customers, they gave us a repeat orders actually. Wow. So that was really one very big turning point for the company actually. Second, if I can remember correctly, somewhere in the October or November 1998, after a lot of follow-up with Bajaj Auto Group, which was the prestigious group of Maharashtra or India, we got meeting with late Shri Rahul Bajaj ji,
The meeting was scheduled for half an hour only, but the way our chairman, he explained the entire wind energy concept, the plans of Suzlon, the technology what we are transferring from Europe to India, he was really convinced actually. And instead of half an hour, the meeting lasted for almost 5 hours actually. Wow. And that was really a big turning point for Suzlon. We got a very big order from Bajaj Auto. And as a result of that, all their ancillary suppliers and many other their vendors, they also gave us repeat orders and many orders actually. So from there, Suzlon journey, what we are selling 1 turbines, 2 turbines, 3 turbines, we started selling tens of the turbines to the customers actually. In all these years, आपका लर्निंग कर्व कैसे रहा है? मेरा लर्निंग का बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. फर्स्ट इज परसिवेरेंस एक्चुअली. We need to believe into that once we are convinced about any idea, about any concept, and we are putting our best efforts, let's not leave the perseverance actually. Continue with the perseverance actually, and you will get the success, which is in today's society is slightly, the tolerance is going down. Actually. People get frustrated very fast, very Immediate soon result actually. chahiye. Immediate result chahiye actually. The second is that trust in the team actually. We need to build the team. We need to put trust in the team, believe in the team actually. If the team grows, you will grow automatically in the life actually. As a professional, because I have spent 22 years into sales and marketing as a chief sales officer, one learning curve which is very simple: never go to the customer, never go to the market to sell anything. अच्छा. The entire 13,000-14,000 megawatt wind turbines, I have not sold even a single turbine, while the whole company believes I have sold the turbines to the customers. Because you can do sales only once. But if you help your customer to buy, that is how you win the customer for the lifetime actually. Wow. And as a leader actually, my learning curve has been very simple, and I would like to narrate this through a Indian mythological story actually. बहुत पुराने जमाने में एक ऋषि अगस्त्य होते थे हमारे, एक ग्रेट सेंट, ग्रेट सागा, बहुत बड़े ऋषि, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान होते थे. एक दिन सुबह वो साधना में बैठे थे अर्ली मॉर्निंग, एंड उनको कुछ आवाज़ आई, कुछ रोने की, कुछ चिल्लाने की. तो उन्होंने अपनी आँखें खोल के, अपनी जो विजडम आँखें हैं वहाँ से उन्होंने विजुलाइज़ किया कि कौन है. उन्होंने देखा कुछ लोग जो है पेट से उल्टे लटके हुए हैं, उनके पाँव बंधे हुए हैं और पेट से लटके हुए हैं, और उसके नीचे एक जैसे आग का एक पूरा वो है एक्चुअली. तो और वो लोग बहुत भयभीत, बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं, और वो चिल्ला रहे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो. तो फिर उन्होंने उनसे बात किया ऋषि अगस्त्य ने कि आप कौन हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे 4 फादर्स हैं. अच्छा. तो बोले ठीक है, तो क्या? तो बोले आप, हमारा आपके ऊपर ऋण है एक्चुअली. यू ओव ए डेट टू अस एक्चुअली. तो बोले क्या डेट है, क्या ऋण है मेरे ऊपर एक्चुअली? बोले कि हमने आपको जन्म दिया है, हमने आपको इस दुनिया में लेके आए हैं एक्चुअली, और ये जो क्रम है इसको आपको आगे बढ़ाना है एक्चुअली, तो आपका ऋण उतरेगा एक्चुअली. तो बोला मतलब कि भाई आपको शादी करके अगर बच्चे आप करेंगे तो जैसे हमने आपको पैदा किया वैसे आप आगे की जनरेशन पैदा करेंगे, तो दिस सिस्टम, दिस साइकिल विल कंटिन्यू एक्चुअली. अदरवाइज पूरा यूनिवर्स रुक जाएगा एक्चुअली. वेदर वी हैव आवर ओन फैमिली बिजनेस और वी आर वर्किंग इनटू एनी कॉर्पोरेट, वी हैव टू ऑलवेज बिलीव कि हमने जो भी इस दुनिया में सीखा है एज ए ऋण, एज ए डेट, हमको वो नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है, उसको पास ऑन करना है. और जब तक हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, तो हम ये दुनिया से जब जाएंगे ना, तो हम वो ऋण लेके जाएंगे एक्चुअली. क्योंकि हम जो भी सीखे हैं वो इधर आके सीखे हैं. वॉट एवर इज अ लर्निंग हमने यहाँ आके सीखा है, भले फैमिली में सीखा है, फैमिली बिजनेस में सीखा है या कॉर्पोरेट में सीखा है, और वो अगर हम जो नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसको नहीं देंगे, तो हम 2 इनजस्टिस कर रहे हैं. एक तो हम उनको ग्रो नहीं कर रहे, दूसरा जो जिस कॉर्पोरेट में या जो बिजनेस को आप हैंडल कर रहे हैं वो आगे जाके खत्म हो जाएगा. The more you grow leaders under you, actually, you will further get elevated. Absolutely. So this has been my learning. What a good philosophy. The leadership type responsibility है कि उन्होंने नए लीडर्स जनरेट करने चाहिए, पैदा करने चाहिए. उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है towards the organization and also towards his leaders or his leader bosses who would have trained him. Correct. What are your early memories of VIT Pune? What was VIT Pune like in 1992? VIT में मेरा एडमिशन 1989 में हुआ था एक्चुअली. और जो उसके पहले का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आई बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान कॉल्ड एज देवली. इट्स अंडर टोंक डिस्ट्रिक्ट नियर जयपुर. एंड टिल 11th-12th माई लाइफ वॉज हैप्पी एक्चुअली. कॉलेज छोटा एक हिंदी मीडियम स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे आराम से. एंड आई वॉज अमंग द टॉप 3-5 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. एंड फैमिली का बिजनेस वगैरह था ना, वी आर वेरी हैप्पी फैमिली.
suddenly like after my 12th, one of my close relative, मेरे मामा जी जो थे गांव में, and he has been also an engineer from BITS Pilani. So he talked to me and my father कि अभी 12th के बाद क्या प्लान है, तो हम बोले कि बिजनेस वगैरह करेंगे, यहाँ पे सब अच्छा है। तो वो बोले कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। एंड देन ही मोटिवेटेड अस। तो फिर हम पूना आए VIT कॉलेज में, और फिर मैं मेरे फादर हम VIT कॉलेज गए 89 के अंदर, और प्रिंसिपल साहब उस टाइम पे खाडिलकर साहब करके बोलते थे। तो उनसे मिले, फिर उन्होंने सब देखा कि भाई आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, राजस्थान छोटे गांव से आप आ रहे हैं, और ऑल द वे वहाँ से आप पूना आएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। तो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड ऑनेस्टली। उनको लगा कि आप बेटर गांव में रहो और खाओ पियो, बिजनेस करो, मस्त रहो एक्चुअली। तो उन्होंने हमको कन्विंस कर दिया और हम वापस हमारे गांव आ गए एक्चुअली। अच्छा। गांव आए, फिर वापस मेरे अंकल मिले, मामा जी, 2-3 दिन के बाद में। बोले क्या हुआ? तो हम बोले कि वो, उन्होंने बोला कि आप बिजनेस वगैरह करो, बेटर इधर अच्छा रहेगा हिंदी मीडियम वगैरह के हिसाब से। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ट्राई तो करना चाहिए। एंड वो मेरे को बचपन से जानते थे, तो ही वाज कन्विंस कि नहीं, यू कैन। आई हैव सम क्यूरियोसिटी एक्चुअली, माय माइंड वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस राइट फ्रॉम बिगिनिंग एक्चुअली। तो हम वापस आए, एंड देन वी रिक्वेस्टेड कि गिव अस वन चांस एक्चुअली, एंड ही वाज काइंड एनफ। ही सेड इफ़ यू आर डिटरमाइंड एंड इफ़ यू आर सो मच पर्टिकुलर दैट आपको करना ही है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। बट आई एम लिटिल स्केप्टिकल कि आप कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आई सेड फाइन एक्चुअली। एडमिशन लेने के बाद में फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स आई मेड इट ए पॉइंट कि मेरे को बहुत मेहनत करना है एक्चुअली, और पूरा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज से ये लैंग्वेज में आना है, प्लस ए कंप्लीट चेंज ऑफ छोटे टाउन से बड़े सिटी में आना है, एंड द एंटायर इकोसिस्टम इज चेंजिंग, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। आई डिड माई बेस्ट ऑनेस्टली, and after 6 months I went to his cabin actually, and I showed my report card to him. All the 6 subjects I was first class actually. And he was so amazed actually. And I remember that moment very well actually. I was feeling so satisfied कि चलो मेरे फैमिली ने जो डिसीजन लिया है, खाडिलकर साहब ने जो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया है, आई एम एबल टू गो इन द राइट डायरेक्शन ऑन दैट एक्चुअली। सो नाइस। उस समय के और कोई प्रोफेसर्स आपको याद आ रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत लंबे मेमोरीज है एक्चुअली, और जितने भी प्रोफेसर्स थे सब एक से ब्रिलियंट थे। जैसे HOD थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, चिटनीस सर, सच ए थरो जेंटलमैन, सच ए ब्रिलियंट गाय एक्चुअली। फिर डिज़ाइन पढ़ाते थे कुलकर्णी सर एक्चुअली, ऑपरेशन रिसर्च महेंद्रे सर, पत्की सर, सहस्त्रबुद्धे सर एक्चुअली। सो द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग एक्चुअली। In my personal case, the credit goes to all the professors. They really touched my life actually, made my career actually. So I'm so grateful to all of them actually. आप देवली से हो, एक छोटे शहर राजस्थान के, क्या यादें हैं उन बचपन की, उन दिनों की? बहुत ही अच्छे दिन, जिसको बोलते हैं ना अच्छे दिन, बहुत अच्छी यादें बचपन की। जो देवली छोटा सा कस्बा था हमारा, एंड सब फ्रेंड्स थे एक्चुअली, फैमिली थी, एंड नो फ्लैट्स, जो कुछ भी आर्टिफिशियल, कुछ भी फ्लैट्स कुछ नहीं था लाइफ के अंदर। वेरी सिंपल, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ऑनेस्ट लाइफ एक्चुअली। स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद में गली में खेलते थे। जो होता है गांव में, गिल्ली डंडा होता है, कंचे होते हैं, क्रिकेट होता है, गली क्रिकेट, वो खेलते थे एक्चुअली। एंड अपने थोड़ी पढ़ाई करते थे, अपनी शॉप थी, उस शॉप पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे पेरेंट्स के साथ में, एंड लाइफ वाज हैप्पी गोइंग एक्चुअली। एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, द हैप्पीनेस इंडेक्स इन दोज डेज वाज ऑलमोस्ट 100% एक्चुअली। मतलब कुछ लाइफ में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं, वेरी सिंपल, वेरी हैप्पी गोइंग लाइफ एक्चुअली, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, द बेस्ट लाइफ। ये हैप्पीनेस इंडेक्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है एक्चुअली। ये विथ एक्सपीरियंस, विथ जर्नी ऑफ द लाइफ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है बराबर। और जो मेरा मानना है इंडिविजुअली कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ की, उनको कैसे मैनेज करते हैं बराबर। क्योंकि लाइफ की जो जर्नी है वो ऑलवेज इट इज़ नेवर एंडिंग। हमारे पास कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम GM बन जाए कंपनी के अंदर, हमारे पास में 2 BHK का मकान हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, बच्चों को अच्छा एडमिशन मिल जाए, एंड दैट विल गिव मी द हैप्पीनेस एक्चुअली, बट इट इज़ ऑलवेज नेवर एंडिंग एक्चुअली। तो जो फैक्ट पुराने लोग बोल के गए हैं जीवन में कि प्राप्ति में समाप्ति है, कि जब तक कोई चीज़ अपने को नहीं मिलती है तब तक अपने को लगता है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जैसे बच्चा है, उसका खिलौना मिल जाता है तो लगता है बहुत खुश हो जाएगा, पर जैसे वो खिलौना मिला वो दूसरे खिलौने के लिए रोने लग जाता है कि अभी मेरे को वो दूसरा चाहिए। वैसे ही अपनी लाइफ है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट एक्चुअली। तो आई थिंक हर इंसान अगर चाहिए तो बहुत अच्छे से खुश रह सकता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करिए आप एक्चुअली। लाइफ में डिसाइड करिए कि कहाँ पोज लेना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है,
और इसमें नेवर एंडिंग रेस है ये एक्चुअली, ब्लाइंडली इसमें आप जितने दौड़ेंगे तब तक, एंड देन एट वन फाइन डे यू विल रिग्रेट एक्चुअली कि मैंने फैमिली के लिए टाइम नहीं दिया, या मैंने ये चीज़ में ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ में ध्यान नहीं दिया, अभी मेरी एज निकल गई. सो रादर देन रिग्रेटिंग एट द फेग एंड ऑफ द लाइफ एक्चुअली, आई फर्मली बिलीव द हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो इंसान अगर कोशिश करेगा कि रोज़ मेरे को 1 इंच 2 इंच 3 इंच 1% 2% 3% इम्प्रूव करना है थ्रू हिज एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, ही कैन मैनेज इट, ही कैन डू. बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात. ईश्वर जी, टेल अस अबाउट योर फैमिली. I am so blessed that I got a wonderful wife. Her name is Anita. And coincidentally, just जब मैंने सुजलॉन ज्वाइन किया मार्च 1996 में, उससे 1 महीने पहले ही हमारी शादी हुई, फरवरी 1996 के अंदर. अच्छा. I have 2 daughters and 1 son. My elder daughter, she is Saloni, and she completed her masters into economics from London School of Economics recently. Wow. My second daughter, she is pursuing LLB at Queen's Mary University at London. And my son, he is in 12th standard right now, studying at IB school in Mumbai. So God is kind enough actually. This is my immediate family. And on my larger family, I have 2 elder brothers and 4 elder sisters. अच्छा. And we are very happy family actually. जब आप काम नहीं कर रहे हो तो क्या करते हैं सर आप? What are your other interests? तो जो मेरा स्पेयर टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसमें मेरी जो प्रायोरिटी है, उसमें पहली प्रायोरिटी मेरी फिटनेस की रहती है कि आई स्पेंड सम टाइम इधर डूइंग योगा और सम वॉकिंग. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि बचपन से मेरे आध्यात्मिक गुरु हमारे गांव में थे, हमारे पास में रहते थे, और उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं. एंड सो आई लाइक टू स्पेंड सम टाइम डूइंग सम मेडिटेशन, रिमेंबरिंग हिम एक्चुअली, एंड दैट मेडिटेशन गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पीस एक्चुअली, लॉट ऑफ calmness, and that has been very helpful in my life so far actually. Oh, Ishwar ji, thank you so much for being on our show. Your journey is truly inspiring. I'm sure our audience is going to learn a lot, that how a person from a small town comes to a city like Pune, does his engineering, goes into the corporate world. Amazing. I have so much of learning today from your talk, from your thoughts. Really, thank you so much for being on our show. Thank you so much. Thank you so much. Indeed, it's my pleasure to be here with you, and I really appreciate your time inviting me, and I wish you all the very best for your future endeavors in the life. God bless you.